Hello students, hope you all are healthy and this video is for class 7. Today we will start the 4th chapter of geography, that is major landforms. In this chapter we will learn about the landforms in our earth. So in our previous chapter we learned about endogenic forces. Basically there are two types of forces, endogenic and exogenic. So in our previous chapter we learned about endogenic forces which act inside the earth, due to which volcanoes, eruption in volcanoes and earthquakes occur due to endogenic forces. So movement of plates up and down cause endogenic forces. So movement of plates cause formation of mountains and rift valleys. Now the second one type is exogenic forces, and exogenic forces act on the surface of the earth. जो exogenic forces होते हैं वो अर्थ की सतह पे काम करते हैं, and these forces are responsible for the formation of land. Unlike endogenic forces, endogenic forces are responsible for the movement of plates of the earth's crust, but exogenic forces are responsible for the formation of lands, because these forces act upon or on the surface of the earth. Now the exogenic forces act in two ways. First, here in your book written endogenic forces, which you have to change as exogenic, because these are exogenic forces which act in two ways. First, in the form of weathering, second in the form of erosion. And due to these exogenic forces, there is formation of landforms on the earth like river valleys, drift and deltas, etc. So first we will start here with the exogenic forces. Weathering. First we will start with weathering. So weathering is a process of breaking of rocks on earth due to heat, cold, frost, chemical reactions, plants and animals. वेदरिंग क्या होता है? ये प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो ब्रेक होती हैं, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं. और उनके टूटने का कारण क्या होता है? ड्यू टू हीट, चाहे वो हीट के कारण हो, कोल्ड, फ्रॉस्ट, केमिकल रिएक्शन हो, चाहे प्लांट्स की वजह से हो या एनिमल्स की वजह से. सो द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ because of heat, cold, frost, chemical reactions, plants and animals are called weathering. Now the rocks are not moved from their original place. Here rocks do not move from their original place, क्योंकि चट्टानें बहुत भारी होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करती हैं, वो अपने ही जगह पे रहते हुए विदाउट डिस्प्लेसमेंट, वो अपने जगह पे रहते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाती हैं, एंड दे आर ब्रोकन डाउन ऑफ फ्रॉम द टॉप. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग? वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वेदरिंग प्रोसेस होता है? सो द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ वेदर. वेदरिंग किस वजह से होता है? जब वेदर किस कंडीशन में होता है? एक्सट्रीम कंडीशन में. एक्सट्रीम मींस एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी. सो इट इज द फर्स्ट फैक्टर इज एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ वेदर, और अदर नेचुरल फोर्सेस हेल्प इन वेदरिंग. इसके अलावा और भी नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया केमिकल रिएक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, which are the factors responsible for weathering. Now there are three types of weathering: physical, chemical and biological. So these are three types of weathering. Now the next one topic is weathering of rocks.
how the weathering of rocks process takes place. So erosion is a consequence of weathering when rocks are weathered. तो इरोजन क्या होता है? ये कंसिक्वेंस होता है, रिजल्ट होता है किसका? वेदरिंग का जो रिजल्ट होता है वो होता है इरोजन. एंड व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड दे आर देन कैरीड अवे. और जब वेदरिंग प्रोसेस होता है तो जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, छोटे पीसेस में, कणों में टूट जाती हैं. और टूटने के बाद में दे आर देन कैरीड अवे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं, बह जाती हैं या किसी चीज के साथ मूव कर जाती हैं बाय द फोर्सेस लाइक रिवर्स, विंड्स, सी वेव्स, आइस एक्सेट्रा. और वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं? रिवर्स, नदियों के जरिए, या फिर विंड, हवा के जरिए, सी वेव्स के जरिए, या फिर आइस के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं. एंड आर डिपॉजिटेड एल्सवेयर, और कहीं और पे जाके डिपॉजिट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं. नाउ व्हेन दिस वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन happen, it results in the formation of different landforms. और जब weathering, erosion and deposition ये तीनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लैंड. weathering, breakdown of rocks into small pieces. erosion, the consequence of weathering means the rocks, the small pieces of rocks carried away from one place to another. And the third one is the deposition, the small pieces of rocks which carried away by the rivers, winds and sea waves are deposited somewhere else. So इन तीनों का रिजल्ट मिलके होता है लैंड का फॉर्मेशन. स्टडी अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स बाय river, by ice, by sea waves and by winds. तो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से जो लैंड फॉर्मेशन होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज वर्किंग ऑफ अ रिवर. सो अ रिवर इज फॉर्म्ड व्हेन सेवरल स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल फ्लोइंग बॉडी. रिवर, नदी क्या होती है? जब कई सारे पानी के सोर्सेस, छोटे छोटे पानी के स्ट्रीम, स्रोते जो होते हैं, जो स्मॉल बॉडीज होती हैं, वो एक साथ जाके एक जगह पे मिल जाती हैं, तो वो जो वाटर सोर्स निकलता है वो क्या कहलाता है? रिवर. द पॉइंट वेयर दीज स्ट्रीम्स जॉइन एंड फॉर्म अ रिवर इज कॉल्ड अ सोर्स. और वो पॉइंट जहां पे ये स्ट्रीम्स रिवर को ज्वाइन करते हैं, जहां पे ये सारे स्ट्रीम्स जाके मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सोर्स. नाउ फ्रॉम दिस सोर्स द रिवर फ्लोज थ्रू स्लोप्स ऑफ वैलीज एंड जॉइंस अ लार्ज वाटर बॉडी. और इस सोर्स से नदी बहती है और बाकी आगे जाके दूसरे किसी लार्ज वाटर बॉडी को ज्वाइन करती है. व्हाट आर द लार्ज वाटर बॉडीज? लाइक सीज and oceans. A mouth is a place where the river stream joins the large water body, and the place from where the river joins the large water body like sea or ocean, the place from where it joins is known as mouth. उस जगह, वो जगह जहाँ से रिवर किसी समुद्र को या किसी महासागर को ज्वाइन करती है, उस जगह को क्या कहते हैं? माउथ. The vertical fall of rivers. जब कोई नदी वर्टिकली फॉल डाउन होती है तो वो बनाती है वाटरफॉल. क्या होता है? वाटरफॉल. इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? झरना. A rapid is a steep segment of a swiftly flowing river in hilly areas. The rocks are eroded and deep valleys are formed known as V-shaped valleys. जो रॉक्स इरोड होते हैं, छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होते हैं और बाद में जाके दूसरे जगह पे डिपॉजिट होते हैं, उनसे क्या बनती है? वी शेप वैलीज. वंस द रिवर लीव्स द हिली एरियाज, एक बार जब नदी
हिली एरियाज से उतर के नीचे आके प्लेन एरियाज में पहुंचती है, द फ्लो ऑफ रिवर इज स्लो। तो जो नदी का बहाव है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। एंड द वैलीज गेट वाइडेंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस इरोजन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। और नदियां और भी ज्यादा ब्रॉड हो जाती हैं, और ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस इरोजन, जो इरोजन प्रोसेस है वो लगातार नदियों के किनारे होता रहता है। एंड द रिवर स्टार्ट्स टू ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड फॉर्म्स meanders, huge bends and loops. Now some facts and information. So the highest waterfall in the world, दुनिया में सबसे जो ऊंचा waterfall है वो कौन सा है? Salto Angels waterfall in South America, and the height of this waterfall is about 975 meter high. Now Niagara Falls in Ontario is one of the highest waterfalls around the world. They are worldwide famous for their majestic beauty. In India, the highest waterfall is Kuchigal waterfall in Karnataka, which is about 455 meter high. Now this topic is still not finished, working of a river. This topic will continue in our next class. I have given you 2 questions for your homework which you have to complete, and don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your name with your class and section. Thank you class.